Absolutely. That was in fact the RPI proposing its own formula to the Sena. BJP now demanding that they want all 7 seats marked out for the allies. Remember, it was the smaller regional parties that have emerging clout that had in fact given an ultimatum to both the BJP and the Shiv Sena to resolve their differences and give them more clarity on the seat sharing. But right now the RPI is saying that there is no question of accepting less than 7 seats. Remember, earlier we had even broken the news about the BJP now hoping that the Sena would actually give these smaller regional parties more seats from their quota. Sahil Joshi, our bureau chief, now joining us from Mumbai. Sahil, just when you thought that the troubles were over, that this marriage of convenience was finally going to work, it's the smaller emerging regional parties that are now giving the BJP and the Shiv Sena a hard time. The RPI here saying that there is no question of accepting less than 7 seats. See, actually, even yesterday only it was clear that the alliance partners are not happy with the formula which Shiv Sena and BJP are offering to them. Since the time, lot of change. Actually, Ramdas Athwale is saying he is known to be non-serious politician right now in Maharashtra. But I can say that the other partners are being moved by Shiv Sena and BJP separately. Just a while back, there was a meeting at Shiv Sena chief Uddhav Thackeray's residence, where Swabhimani Shetkari Sangatan's chief Raju Sethi is present, and Shiv Sena is trying to convince Raju Sethi to be with them. Right. It is claimed that all the 4 allies are with Shiv Sena, whereas the BJP core committee meeting has just ended, and we will be waiting what actually BJP core committee now decides over this particular issue. But the problem is that unless the alliance partners are not satisfied, this grand alliance will not take shape, that's for sure. Absolutely, Sahil Joshi, thank you for bringing us that update. This is as the smaller parties are refusing to accept the BJP Sena seat sharing formula. Left with only 7 seats, they have pushed the grand alliance back into trouble, despite the big brothers claiming that all is well. The seat wrangle has forced Amit Shah to postpone his visit to the state to meet state BJP leaders. Both the Sena and the BJP are holding separate meetings to find a way out of the current mess, where allies are being consulted separately. The BJP has also appealed to the Sena to consider increasing the quota of alliance partners by allocating 5 more seats to them from its quota. The BJP, meanwhile, has put the onus on the Shiv Sena to pacify and convince smaller allies to accept its latest formula, therefore tactfully putting pressure on the Shiv Sena to divest some seats from its share of 151. All know that all is not well with the Sena-BJP alliance, and now the cracks in the Grand Old Alliance are all the more visible. We are at Matushri, where Uddhav Thackeray has called in an emergency meeting with his members, and we are also learning that the Bharatiya Janata Party has called in a core committee meeting, while the BJP has made it amply clear that the task of appeasing the junior alliance partners will rest on the Shiv Sena, and that it will have to come down from the number of 151. Shiv Sena is not even ready to blink. With this scenario at hand, the junior alliance partners are very miffed. They are looking for a larger share. The Shiv Sena feels that this is the best opportunity to come to power. The BJP, obviously, after the thumping victory in the general election, feels they need a larger share, and they also need to have a larger share. But then Shiv Sena is acting the bigger brother. This has now become a war of egos. Political experts say that Shiv Sena and BJP together are a force to reckon with in Maharashtra. But it is going to be very unfortunate if this grand old alliance disintegrates. With camera person Sai Prasad Patil, this is Pankaj Upadhyay in Mumbai for Headlines Today. And as for the new formula that was proposed yesterday, the BJP, remember, was given 130 seats while the Sena got 151. Smaller allies were therefore left with only 7 seats. So this means 7 seats for 4 parties, while 2 among them have no specific demands. The RPI had initially demanded 20 and now are demanding all 7, and the RSP 10. The Mahayuti will be meeting again today, but before that, BJP leaders met Shiv Sangram leaders. जो साथी है, हमारा बिल्कुल साफ मानना है बीजेपी का कि हम हमारे साथियों को छोड़कर आगे नहीं जा सकते, और इसलिए कोशिशें ये चल रही है कि हमारे साथियों को भी हम साथ में ले, कोई समाधान उनके लिए भी ढूंढे और उस समाधान के साथ हम आगे जाए। और इसीलिए जिस समय शिवसेना ने हमारे सामने फार्मूला रखा, उस समय हमने उनको साफ शब्दों में ये कहा है कि साथियों को साथ में लेकर ही आगे जाना है, और इसके लिए हम लोग मिलकर वर्किंग करेंगे। बीजेपी की तरफ से उन्होंने कहा है कि घटक दलों को साथ लेकर ही हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है।
और बीजेपी ने हमें आज संदेशा देने के लिए हमें मैसेज दिया था, लेकिन आज तक अभी तक उनकी तरफ से कोई संदेशा आया नहीं, कोई प्रस्ताव आया नहीं, जो बुलाया नहीं है। अभी देखते हैं आज शाम तक किसी तरह से किसी भी हालत में आज ये हल निकलना ही चाहिए, क्योंकि 3 दिन सिर्फ रह गए अभी। ये वो डायरेक्टली उद्धव जी ने सबके साथ बातचीत करना चाहिए, लेकिन उनकी रणनीति क्या है उनको पता है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, इतना ही बोलूं। The big question mark over the Grand Ole Alliance still remains. I have some Shiv Sena supporters with me. अभी भी सवाल निशान बना है कि ये जो गठबंधन था 25 साल पुराना, ये कायम रहेगा? बिल्कुल कायम रहेगा, पक्का, एकदम पक्का। तो अगला सवाल यही है कि शिवसेना क्या 151 के नंबर से नीचे आएगी? बिल्कुल नहीं, 151 से तो शिवसेना बिल्कुल नीचे नहीं आएगी, ये भी पक्का है। लेकिन बीजेपी का यहाँ पर कहना है कि शिवसेना को बाकी घटक दलों को 5 सीटें और दे देनी चाहिए। देखिए, आप क्या कहेंगे? शिवसेना ने तो ऑलरेडी छोड़ा है, बीजेपी के लिए 11 सीट छोड़ दिया है और घटक पक्ष के लिए 7 छोड़े हैं। मतलब शिवसेना ने टोटल 18 सीट छोड़ी है। एक तो तरफ बीजेपी आपको सीट छोड़ने की बात करती है, दूसरी तरफ शिवसेना अड़ी हुई है, घटक दल यहाँ पर नाराज हैं। ऐसे में 27 तारीख आखिरी है नामांकन की, ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, बिल्कुल नहीं है। ये पूरे महाराष्ट्र के पूरे जनता को पता है कि जो फार्मूला था, जो प्रमोद महाजन, मुंडे साहब और बाला साहब ने जो फार्मूला बनाया था, 117 से 17 पे बीजेपी लड़ती थी और 171 पे शिवसेना लड़ती थी। तो अभी जो फार्मूला, अभी चलो ठीक है, लेकिन हालात भी तो बदल गए ना, सेंटर पे बीजेपी इतनी जीत मिली। इसीलिए तो जो बाकी घटक दल है, जो महायुति महाराष्ट्र में बनाई गई है, उसके लिए उसकी पूरे सीट शिवसेना के कोटे से 18 सीट छोड़ी है उद्धव साहब ने। हमारे इतना बड़ा दिल शिवसेना ने दिखाया है। कहीं ना कहीं आप अहम की लड़ाई तो नहीं बन गई? नहीं, ऐसे हो भी नहीं सकता है। आपके पास सुनहरा मौका है, इस बार शिवसेना बीजेपी को सत्ता मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके की लड़ाई बिल्कुल सामने आ गई है मैदान में, इससे क्या जाहिर होता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 20 दिन बहुत हो गए लड़ाई के लिए, क्योंकि जो भी बन चुका है, जैसे सेंटर में वैसे यहाँ भी शिवसेना का बन जाने वाला है। तो मुख्यमंत्री की बात एक बार फिर उठेगी? उठेगी, सही बात है। और शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होएगा, सीएम शिवसेना का ही होएगा, और वैसी ही चर्चा होने वाली है और वैसा ही होने वाला है महाराष्ट्र में, ये बात तो भी पक्की है। और बीजेपी वाले तो सब समझते हैं। The Shivasena supporters pretty adamant as far as the numbers go. They say very clearly that the Shivasena is not going to budge from the number of 151, and if and when the Shivasena BJP alliance wins the majority, Uddhav Thackeray is the one that is going to be the Chief Minister of Maharashtra. With camera person Sai Prasad Patil, this is Pankaj Upadhyay in Mumbai for Headlines Today.